Dear students, good morning. I am Ramdas. I welcome you to my channel, Maths from Basics for You. So, today it's my 40th video and I'm going to teach and in the previous class we have learned the tips and tricks of trigonometry and some problems, right? So, dear students, today we are going to do more problems on this. To begin with, because I have got some requests for some of my students that they want more problems and to start from scratch. So this is an opportunity for you all. This is an opportunity for you all to know trigonometric problems on trigonometric identities. So this will help you. So here today I am going to teach you right from the scratch, from the basics, how to tackle a problem, because this will help you. I had told you earlier, maths will make you intelligent, but trigonometry will make you sharp and smart. So let's start without wasting our time. Let us start with our problems. So before I start, remember my funda, learn maths right from basics. I am here to teach you math right from basics. Done? Okay, dear students, we will take some important small problems and do this one after the other. Let us learn from scratch. Dear students, to begin with, I have taken a very simple example wherein this will make you understand trigonometric ratios. At the same time, you will be able to solve problems. This is very simple problem, but for students who are just get into trigonometry, they need more about it. So let them understand this. So those who are already aware of this can either skip it or you can watch it as a revision. So what I have asked you, if sin theta equals 3/5 and theta is less than 0 degrees and less than 90 degrees. What does it mean? Say theta is an acute angle. That's the meaning of this, because for any triangle to have a triangle, for any two lines to make a triangle, it should have some angle. So it cannot be 0 degrees. If it is 0 degrees, it will become a straight line. Okay. So theta should be greater than 0 degrees and less than 90. If it is equal to 90, it becomes a right angle triangle. It means to say that supposing you have a line, supposing if this becomes theta, so this is A, B, C, I call this ABC. So what it says, if you take theta, so theta, it is less than 90 degrees. See, now this is, if you draw a normal from here, so it is less than 90 degrees and greater than 0 degrees. If it lies here, what? If it lies on this plane, it is 0 degrees, isn't it? So it means to say that, I am trying to explain you, because in the examination if you get like this, so it means to say theta is greater than 0 degrees because it is making an angle and it is less than 90 degrees. If this becomes full, this becomes what? It becomes a right angle triangle. Then this logic doesn't apply, because for a right angle triangle we have to derive sin theta. I will teach you how to find these values. So with this concept, let's begin. So for that, what you have to do, draw a right angle triangle, right? I call this as A, B, AB and C. So what I will call, instead of that I will call like this, yeah. So angle C is theta. If this is theta, the opposite side is, as I have taught you in the previous class. So now let us, without wasting our time, what I said, sin theta equals to 3/4. So what does it mean? What is sin theta? Opposite side by hypotenuse.
opposite. If you make this theta, this will be the opposite side, but since this is, I have chosen this as theta, which is also an acute angle. Even this also is an acute angle, this is also acute angle, but this is a right angle triangle. So if you treat this as a theta, so the opposite side will be what? This is here, he has given opposite side is 3, hypotenuse is 4, 5. So hypotenuse is 5. So this is our opposite side, this is our hypotenuse, this is equals to 5, and we are supposed to find BC, that is our adjacent side. Once you know this, all the sides, we can get all the relations, all the trigonometric ratios. So first what I will do, we know that sin theta equals to 3 by 5, isn't it? That is nothing but opposite side by hypotenuse. Now I will rub this. Now here what, in order to find the adjacent side equals to question mark. How to find adjacent? To find adjacent side, we have from Pythagoras theorem, AC square equals to AB square plus BC square, right? From Pythagoras theorem we have what? AC square equals to AB square plus BC square, or I will write the other way because I have to find AB square, or I will write like this, or AB square plus BC square equals to AC square. What I do, we have to find out BC square. So what I will do, I will keep BC square on the left hand side, I transfer this to the right hand side. This becomes what? AC square minus AB square. Because there are some students who are weak in mathematics, for their sake I am doing this, otherwise straight away I would have got it a problem. So students who are good in mathematics need not feel bad, just bear with those people, with those students who are weak in mathematics, for them I am doing this, otherwise even I don't want to waste my time, but for their benefits cooperate with those students. So if you have already learnt Pythagoras theorem, just revision or just think, recollect that you are a student in 10th standard, we learnt all this, in 9th only you have learnt this, so recollect and rejoice your memories. Okay students? So BC square is what? BC square equals to, what is AC? AC is 5, I will write 5 square minus, what is AB? AB is 3 square. What happens to this? BC square equals to 5 square is 25 minus 3 square is 9 equals to 16. When BC square equals to 16, therefore BC equals to square root of 16, that is nothing but 4. Whatever is the unit, whether it is centimeters, meters, millimeter, whatever it is, that is the thing. So 4 we got. What happens over then? Now opposite side equals how much we got? Opposite side is 3. Then adjacent side just now we have found out, that is 4, and hypotenuse is 5. Done. From this we can find out all the values we want. Okay, I'll rub this. Now sin theta equals 3 by 5. In the brackets mention that is already given. Okay. Next, cos theta is what?
adjacent side by hypotenuse. What is adjacent side? Adjacent, now just now we have found out 4 by 5. Now next, tan theta. Tan theta is two ways you can do: directly opposite side by hypotenuse, opposite side by adjacent side. That is, opposite side is 3 by adjacent side is 4. Otherwise, you can also say sin theta is, what is tan theta? Second method, tan theta is equals to sin theta divided by cos theta. 3 by 5 divided by, what is cos theta? 4 by 5. 4 by 5. Denominator is that numerator and the denominator gets cancelled. That is, so you left with what? 3 by 4. Therefore, tan theta equals to 3 by 4. Both ways you can calculate. So therefore, you got tan theta equals to 3 by 4. 3 by 4. We have reciprocals. Reciprocals. What is the reciprocal of sine? Cosecant theta. So, cosecant theta is what? Cosecant theta is hypotenuse by opposite side, or just invert this. Reciprocal means 5 by 3. Easy method. 5 by 3. Cos theta, what is the reciprocal of cos theta? Is secant theta. Reciprocal of that will be 5 by 4. 5 by 4. What is the now? Reciprocal of tan is cot theta. What will be that? 4 by 3. Just reverse it. 4 by 3. So, we have got all the values of other trigonometric ratios by knowing one simple technique, that is knowing this is equals to 4. For using Pythagoras theorem, we have found out the unknown value. Using that, after knowing these relations, definitely you can calculate all the values you want. Only thing which misleads you is this. Otherwise, once you know the method, easily can do it. So dear students, I hope this will be of great help to you in understanding. First to remind you, to revise, to remind, to refresh you the trigonometries and its reciprocals and how to compute its values. So dear students, we have found problem number 1, which is useful to you as well as for students who just got into trigonometry. Yeah, one more thing I want to emphasize here, that is, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, सॉरी मैंने हिंदी में बोलना भूल ही गया, तो इसका ये मतलब है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में पक्का होना चाहते हो, मजबूत होना चाहते हो, स्ट्रांग होना चाहते हो, तो आपको एक चीज़ की कमी है. वो चीज़ क्या है? मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाला था उस वीडियो को और वीडियो नंबर 2, दैट इज वीडियो इसके पहले, दैट इज पार्ट 1, पार्ट 2 एंड टुडे पार्ट 3, इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लो. अगर इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान रहेगा और आपके फिंगर टिप्स पर ही रहेगा. सो अगर आप इस रिलेशंस को, आप में जो प्रॉब्लम्स करने वाला हूँ उसमें आपको सोच में डाल देगा किस तरह इसको सॉल्व करना है, तो आपको बहुत आसानी से मैं तरीका सिखाऊंगा किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. अगर वो सीख जाओगे तो जो भी प्रॉब्लम दे इतना ही क्या बस कर देंगे, ये आप में जिद पैदा होगी. मैं वही चाहता हूँ, सोते हुए शेर को जगा रहा हूँ. जागिए जागिए महाराज, आपका वक्त आ गया है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो शुरू करें सेकेंड प्रॉब्लम. यस, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया गया है आपको, 1 minus cos square theta into secant square theta equals to tan square theta. We have to prove 1 minus cos square theta into secant square theta equals to tan square theta. अब आपको समझनी है एक बात, क्या इंपॉर्टेंट. सो अगर tan पकड़ना है आपको, किस तरह पकड़ोगे? वी हैव वन रिलेशन, क्या? 1 plus
tan square theta equals to secant square theta, है ना? इसमें भी tan पकड़ सकते हैं, मगर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, वेरी कम्बरसम, isn't it? दिस में वेरी कम्बरसम. इससे आसान तरीका क्या है? tan को, what is tan? sin theta by cos theta is what? tan theta, है ना? तो sin theta और cos theta अगर आपको मिल गया तो आसान से आप tan theta पकड़ सकते हो, isn't it? Once you discover, once you find out sin theta and cos theta from this, you can easily compute, you can easily calculate, or I can easily prove this relation 1 minus cos theta into secant square theta equals to tan square theta. Very simple, but he has given a clear cut indication. What is 1 minus cos square theta? 1 minus cos square theta is nothing but sin square theta. What is secant square theta? Reciprocal of cos theta. So if you take reciprocal, definitely the problem is over. Very simple. This is how you have to think, generative thinking. आपके सोच को आगे बढ़ाना है. क्या? एक स्टेप आगे सोचना है. क्या? 1 minus cos square theta क्या होता है? sin square theta. And secant square theta क्या होता है? 1 by cos square theta. So secant is sin square theta by cos square theta, nothing but tan square theta. हो गया, खत्म. अगर इस तरह सोच आप डेवलप करोगे तो प्रॉब्लम आसानी से हल कर पाओगे. यही मैं आपके अंदर जनरेट कर रहा हूँ, आपके लिए क्या कर रहा हूँ, ये इंटरेस्ट जगा रहा हूँ. तो विल डू दिस प्रॉब्लम. सो वी नो दैट sin square theta plus cos square theta equals to 1, and sin square theta equals to what? 1 minus cos square theta, correct? We have got this. This is nothing but our 1 minus cos square theta, and cos theta equals to what? 1 by secant theta reciprocal. So from this we can easily find out cos theta. आसान हो गया. और कुछ क्या चाहिए आपको? प्रॉब्लम तो सर हल हो गया, सॉल्व हो गया, तो करेंगे. आंसर कीजिए. सो विद दिस आई विल ट्राई टू नाउ. Now 1 minus cos square theta equals to sin square theta. I call this as equation 1, and cos theta equals to 1 by secant theta, isn't it? Or we want cos square, that is secant square. So what happens here? If you square both sides, it becomes cos square theta equals to 1 by secant square theta, isn't it? That is nothing but what? That is nothing but secant square theta equals to 1 by cos square theta, because they are reciprocals. So what I will do, I will substitute the values of स्टार्टिंग प्रॉब्लम 1 या 2 स्लो से करूँगा, थोड़ा धीरे से करूँगा. उसके बाद ये धीमे, ये रफ्तार से नहीं कर पाएंगे हम. वी हैव टू गो फास्ट. सो फर्स्ट प्रॉब्लम विल ट्राई टू गो स्लो एंड स्टेडीली. सो नाउ व्हाट हैपेंस इक्वेशन. देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes what? That is 1 minus cos square theta is nothing but sin square theta into secant square theta is nothing but 1 by cos square theta, which is nothing but
sin square theta by cos square theta, which is equals to tan square theta. Therefore 1 minus cos square theta into secant square theta equals to tan square theta. Hence proved. Hence proved के लिए we'll use a shortcut abbreviation. What I'll do in henceforth, I'll write HP. HP means hence proved. So now onwards, instead of writing a full sentence, I write HP. Hence HP. So understand, it can be horsepower too. The moment you solve this problem, you'll get horsepower. So dear students, I'll rub this. So students, ये प्रॉब्लम क्वाइट सिमिलर ही है, कुछ डिफरेंट नहीं. सो थोड़ा रफ्तार तेज करेंगे. वी नो व्हाट इज 1 में sin square theta. 1 में sin square theta is nothing but cos square theta. And what is tan square theta? Sin square theta by cos square theta. Cos square theta and sin square theta. One में cos square theta and cos square theta cancels. We are left with sin square theta. That's how you have to tackle. So when you see this problem, immediately आपका दिमाग दौड़ना चाहिए और सोचना है 1 में sin square theta दिया है, तो 1 में sin square theta क्या है? cos square theta. और tan दिया है, tan क्या है? sin square theta by cos square theta. cos square theta कैंसिल होकर आपको sin square मिल जाएगा, है ना? सो करेंगे. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. दिस बिकम्स व्हाट? दिस इज cos square theta into sin square theta by cos square theta. So cos square cancels. You are left with what? Sin square theta. Here right, since cos square theta plus sin square theta equals to 1. Since cos square theta, therefore 1 minus sin square theta equals to cos square theta. ये लिखना ज़रूरी है, वरना थोड़े एग्जामिनर खुश नहीं होंगे. उनको खुश करने के लिए आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा. डन. ये रहा आपके लिए 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का प्रॉब्लम. सो विल रब दिस. tan theta plus cot theta equals to secant theta into cosecant theta. So dear students, यहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा सा लड़ाना है. यहाँ पर पूछा गया है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू secant थीटा इंटू cosecant थीटा, है ना? तो सोचो यहाँ पर जब भी आपको प्लस साइन दिया जाता है, इसका मतलब कहीं पे आपको एलसीएम लेना है या नहीं. एक पॉइंट आपके दिमाग की बत्ती जलाओ. तो जब भी देखोगे इसका मतलब है आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, एलसीएम के बारे में सोचना चाहिए. और क्या है? व्हाट इज tan थीटा? tan इज नथिंग बट sin बाय cos. एंड व्हाट इज cot? cos बाय sin. अगर दोनों का एलसीएम लोगे तो मिल जाएगा, रेसिप्रोकल्स है ना, तो करेंगे. इस तरह आपको सोचना चाहिए, तो बहुत जल्दी से आप सोल्यूशन को ढूंढ पाओगे, वरना ढूंढते रह जाओगे. सो हम करेंगे इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से. ये क्या होता है? फर्स्ट किस तरह अप्रोच करना है आपको? Q1 tan थीटा प्लस cot थीटा. You have to show what? Secant theta into cosecant theta. So I take LHS, only LHS, right hand side I'll leave as it is. Whatever answer we get, that is equal to right hand side. So tan theta क्या होता है? That is sin theta by cos theta plus what is cos theta? That is cos theta by reciprocal will be sin theta
बन गया. अब एलसीएम ले लो. एलसीएम क्या है? दैट इज साइन थीटा इंटू, पहले इसको लिखूंगा आगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिकॉज ए इंटू बी इज इक्वल बी इंटू ए. सो मैंने इसको शफल किया उतना ही. सो चाहे तो आप कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हो, मगर मैंने इसको अदल बदल किया है. तो इधर क्या होता है एलसीएम लेने पर, दिस इज योर एलसीएम. तो इधर कॉस थीटा डिवाइड हो जाता है, तो बचा क्या? साइन. साइन इंटू साइन, ये बन गया क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस साइन. इधर साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा, दैट इज कैंसिल्स हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाए कैंसिल हो जाएगा, बचा है कॉस थीटा. कॉस इंटू कॉस बिकम्स साइन स्क्वायर, दैट इज बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1, है ना. देखो कितना आसान हो गया प्रॉब्लम. दैट बिकम्स 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. राइट हैंड से क्या पूछा आपको? सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा. ये क्या बन गया? इसका रेसिप्रोकल क्या? सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज नथिंग बट 1 बाई साइन का रेसिप्रोकल 1 बाई कोसेकेंड थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा. तो डिनोमिनेटर गोस टू द न्यूमरेटर. ये क्या बन गया? इक्वल्स टू व्हाट? सो इसको ऊपर भेज दो, तो रीअरेंज करेंगे. दिस विल बी इक्वल्स टू सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा. सो what he wants? Secant theta into cosecant theta, you got it. See, cosecant theta goes up, this other goes to numerator, this other goes to numerator. Cosecant theta into secant theta, that is a into b or b into a, both are same. I have just once again rearranged it. So ये क्या बन गया? Secant theta cosecant theta, which is equals to right hand side. Therefore equals to what? Secant theta into cosecant theta. This is your answer. So चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड लिख सकते हो, या राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड LHS इक्वल्स RHS लिख सकते हो. दैट इज you can either write, therefore straight away, therefore that is tan theta plus cot theta equals to what? Secant theta into cosecant theta. Hence proved. HP मैंने बताया था ना. So इसका मतलब HP का मतलब hence proved. तो इतना लिख दो प्रॉब्लम का. चाहे तो 2 मार्क्स भी दे सकता है या 4 मार्क्स भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर grade. If you are in diploma or PUC, you may get 4 marks. If you are in engineering college, 2 marks guaranteed. इस प्रॉब्लम को. So dear students, we have to prove 1 minus sin square x into 1 plus tan square equals to 1. Very simple problem. You have to use a formula. You should know to use a formula, because whatever formula I have taught, it is coming into play now. So what is sin square x? 1 minus sin square x is nothing but cos square x. Since you have to write this sin square x plus cos square x equals to 1. Therefore cos square x equals to 1 minus sin square x. I am going to use it here. This is, we know that 1 plus tan square x equals to secant square x. I told you formulas are very important, which you are supposed to remember. If you don't remember this formula, there is no fun in attempting trigonometric problems, because without formula you cannot attempt, you cannot even think of doing problems here. So this becomes what? 1 plus tan I can write written as
secant square x, right? And what is secant square x? He wants 1, isn't it? So, and this is what? Cos square x, and this is secant is nothing but 1 by cos square x, because cos x equals to reciprocal of this is secant x. So, since it is secant square x and secant x equals to 1 by cos x, or secant square x equals to 1 by, if it is secant x, it is 1 by cos. If it is secant square, this should be cos square. So this becomes, so cos square cancels. You are left with 1. What do you want on the right hand side? 1. Hence, therefore, 1 minus sin square x into 1 plus tan square x equals to 1. Hence, proved. Hence, proved. Very simple problems. So, make a note of this. Gradually, we'll try to cover up some complicated problems. So, copy this. So, dear students, we have a problem sin A into cos A into tan A plus cos A into sin A into cot A equals 1. We have to prove this. Very simple problem. I love this. So, this is sin A into cos A. For this tan, I will write sin by cos. What is tan theta? That is sin A by cos A plus cos A sin A into cot S cos A by sin A. So what happens here? Cos cancels, sin and sin cancels. So sin A into sin A is sin square A, that is sin square A, and here cos into cos square A. So what is sin square x? We know sin square theta plus cos square theta equals to 1. So which is nothing but equals to 1, isn't it? Since sin square theta plus cos square theta equals to 1. Therefore, sin A cos A into tan A plus cos A sin A cot A equals to 1. Hence proved. So dear students, very simple problem. You should know to use formula. That's all. There is nothing here. So students of your caliber can definitely solve this, but you have to remember the formulae. That's all. So dear students, we have a problem here. So this cot doesn't look like cot, it looks like lot. So cot theta plus 1 the whole square plus cot theta minus 1 the whole square. So you have to prove that is equals to 2 cosecant square theta. So very simple. Then nothing but a plus b the whole square into a minus b the whole square. Solve that, it's over. So what is this? So a plus b is what? We know a plus b the whole square equals to a square plus b square plus
2ab a minus b, the whole square is a square plus b square minus 2ab. So here suppose this becomes what? This becomes what? This becomes cot square theta plus 2ab, 2 cot theta into this 2ab plus 1, isn't it? Plus I'll put this in brackets so that it will not get confused. So this is again cot square theta minus 2ab into 1 plus 1. So we'll remove the, this equals to cot square theta plus 2 cot theta into 1 is, forget it, plus 1 again here plus cot square theta minus 2 cot theta plus 1. So here plus cot theta plus 2 cot theta minus 2 cot theta goes. So we have one cot square and here one cot square. What happens here? That becomes 2 cot square theta, because here we have one cot square theta and here we have one cot square theta. So that if you add that, it becomes 2 cot square theta plus 1 plus 1. So it becomes plus 2, isn't it? Right? So what is common here? This is nothing but I take 2 common, this becomes cot square theta plus 1, right? What is cot square theta plus 1 is nothing but cosecant square theta. We have proved it, that is 1 plus cot square theta equals to cosecant square theta. So we know that 1 plus cot square theta equals to cosecant square theta, isn't it? So instead of cot square theta plus 1, I'll put cosecant square theta. So what happens to this? So this becomes two into cosecant square theta. What he wants? He wants 2 cosecant square theta. So we have proved this. Therefore, I'll write this. Therefore, cot theta plus 1 the whole square plus cot theta minus 1 the whole square equals to 2 cosecant square theta. Hence, proved. Okay, dear students, very simple problem. Hence, proved. So make a note. So dear students, बच्चों यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉब्लम है. sin x divided by 1 plus cos x plus 1 plus cos x by sin x equals to 2 cosecant x. जब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम देखोगे, प्लस इन बिटवीन एलसीएम लेना ज़रूरी है. ओके, अगर एलसीएम ले लोगे तो प्रॉब्लम ख़त्म. सो इसको इसके सिवा दूसरा चारा ही नहीं है, तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा. एलसीएम लेने के बाद
खुद ब खुद सॉल्व करोगे, ये हमारा वादा है आपसे। सो इसका एलसीएम क्या होगा? दैट इज एलसीएम इज sin x into 1 plus cos x. So 1 plus cos x, 1 plus cos x goes, we have sin x. Sin x into sin x, it becomes what? Sin square x. x जाके n की तरह लग रहा है, इसलिए sin square x प्लस sin x कैंसिल होगा, 1 plus cos x, 1 plus cos x plus 1 plus cos x is 1 plus cos x the whole square. So that becomes 1 plus cos x the whole square. Correct? लिख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल लिखिए. This is equals to sin square x. So this is 1 square plus 2ab, that is cos x plus b square divided by sin x into 1 plus cos x. So rearrange this. By rearranging, what happens is, this is sin square x plus cos square x plus cos square x plus 2 cos x plus 2 cos x plus 1 divided by sin x into 1 plus cos x. So sin square x plus cos square x is nothing but 1. That is, I'll write this. This is equals to 1, isn't it? So 1 plus 2 cos x, 2 cos x plus 1 divided by sin x into 1 plus cos 2x. I love this. I love this too. So here 1 plus 1 is 2. That is, I can write like this: 2 cos x plus 2 divided by sin x into 1 plus cos x. Correct? So what I'll do, I'll take this 2 common, that is 2 common, that becomes cos x plus 1 divided by sin x into 1 plus cos x. I'll rearrange this in the same way. Cos a plus b is equals to b plus a. So I'll rearrange this. Can write this equals to what? This is nothing but 2 into 1 plus cos x divided by sin x into 1 plus cos x. So 1 plus cos x, 1 plus cos x cancels. We are left with what? We are left with 2 by sin x. What is sin x?
Reciprocal of sin x is cosecant x. That is 2 by 1 by cosecant x. So reciprocal of sin x is 1 by cosecant. So cosecant goes to numerator and this becomes what? 2 cosecant x. What do you want on the right hand side? He wants 2 cosecant x. Yes, we have got it. Therefore, sin x by 1 plus cos x plus 1 plus cos x by sin x equals to 2 cosecant x. Hence, proved. So dear students, very simple problem. Of course, it's tricky. That's why you are given marks. If it's not tricky, who will give marks? अगर प्रॉब्लम करोगे तो मार्क्स मिलेगा ना. जैसा काम वैसा दाम. अगर प्रॉब्लम मुश्किल रहा थोड़ा तो उसका मार्क्स भी ज़्यादा रहेगा. अगर आसान हो तो कौन आपको 4 मार्क्स 6 मार्क्स देगा. तो इतना आसान है. इतना है कि एक हिंट दूंगा आपको. जब भी ऐसा प्लस देखोगे एलसीएम लो. डोंट ट्राई टू डू समथिंग विद दिस. इसको 1 प्लस कॉस दे सो कुछ ना कुछ करने जाओ मत. सो स्ट्रेट अवे एलसीएम खुद ब खुद मिल जाएगा. सो आई रब दिस. विल गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम. So dear students, आपके लिए एक प्रॉब्लम और है quite similar to the previous problem. Cos theta by 1 plus sin theta plus 1 plus sin theta by cos theta. Show that these are equals to 2 secant theta. So फिर से वही प्रॉब्लम है मगर वैल्यू फॉर्मूला चेंज किया है. Instead of sin we have given cos. So let's take LCM. It's a revision like we'll do once again. So what I'll do. This is, I take 1 plus, I'll write little down because I won't get. So, I'll write 1 plus sin theta into cos theta. So 1 plus sin theta cancels. Cos into cos becomes cos square theta plus cos and cos cancels. We are left with 1 plus sin theta and 1 plus sin theta the whole square. 1 plus sin theta the whole square. So ये क्या हो जाएगा? This is equals to cos square theta plus a plus b the whole square. That is 1 square is 1 plus 2 sin theta plus sin square theta divided by 1 plus sin theta into cos theta, right? So what happens to this? The same. So I'll write first to begin with sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta, 2 sin theta plus 1 divided by 1 plus sin theta into cos theta. Done. So I'll rub this.
So what is this? This is nothing but 1 plus 2 sin theta plus 1 divided by 1 plus sin theta into cos theta. And what is this? This is equals to 1 plus 1 is 2 plus 2 sin theta, 2 sin theta divided by 1 plus, I'll write this first, cos theta I'll write, cos theta into 1 plus sin theta. So what is common? 2 is common here. I'll take the 2 common outside. This becomes 1 plus sin theta divided by cos theta into 1 plus sin theta. So 1 plus sin theta, 1 plus sin theta cancels. You are left with 2 by cos theta. That is equals to 2 by cos theta. What is cos theta? The reciprocal of cos theta 1 by secant theta. Can write like this. That is nothing but 2 by 1 by secant theta, which is nothing but 2 into secant theta. Correct? The denominator goes to the numerator. So that becomes this. So I rub this. Therefore, cos theta divided by 1 plus sin theta plus 1 plus sin theta divided by cos theta equals to 2 secant theta. 41 क्या चाहिए उसको? 2 secant theta आ गया. बहुत आसान है. इतना ही आपको चतुर होना है, सोचना है और लिखना है बस. इतना होने पर एक सलीम जावेद का डायलॉग लिखना है. क्या है वो? हेंस प्रूव्ड. इतना लिखना है आपको, सही होने पर, गलत होने पर नहीं. ओके, विल गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम. वी हैव ए प्रॉब्लम हियर. यहाँ पे tan थीटा डिवाइडेड बाई secant थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई secant थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cosecant थीटा आपको प्रूव करना है. तो यहाँ पर मैंने बताया था पहले ही, जब भी आप प्लस साइन या माइनस साइन इन बिटवीन 2 फंक्शंस देखोगे तो क्या करना है, आपको एलसीएम लेना ज़रूरी है. तो एलसीएम लेने से आसान हो जाएगा. उसके बाद जो प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे उसी पर निर्भर होगा और आपको आसानी से इसका जवाब भी मिल जाएगा. So, the moment you see a plus sign or negative sign in between 2 functions, it is a hint for you to see that you will take LCM. So, you can go ahead with that and try to solve this problem. So, let's try to solve this problem and you will follow the steps by yourself. It will be easy for you to how to do this problem. So, dear students, so इसका LCM क्या होगा? दोनों को लेके एलसीएम लेना पड़ेगा. सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? secant थीटा माइनस 1 इंटू secant थीटा प्लस 1. ये रहा आपका एलसीएम. secant थीटा कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या? secant थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा. तो क्या हो जाएगा?
tan थीटा इंटू secant थीटा प्लस 1 बनेगा, प्लस साइन तो प्लस साइन डाल दो, सो secant थीटा प्लस secant थीटा कैंसिल हो जाएगा, tan इंटू secant थीटा माइनस 1, सो दिस बिकम्स tan थीटा इंटू secant थीटा माइनस 1। तो इसके बाद हम क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर जो भी है उसको मल्टीप्लाई करो, आगे देखेंगे क्या होता है। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, सो tan इंटू secant दैट बिकम्स tan थीटा इंटू secant थीटा, प्लस साइन है तो प्लस डालो, tan थीटा इंटू 1 इज tan थीटा, ब्रैकेट इस्तेमाल करो ताकि आप गलती ना करें, प्लस सो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू secant थीटा, tan थीटा इंटू secant थीटा, प्लस इंटू माइनस, सो माइनस tan थीटा divided by secant theta minus 1 into secant theta प्लस 1। तो इसके बाद ब्रैकेट निकालो, तो यह क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा secant थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस tan थीटा divided by secant theta minus 1 into secant theta plus 1। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, क्या है हो जाएगा, सो secant थीटा tan थीटा इंटू secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस का है tan थीटा secant थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस tan थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, सो तो ये क्या बनेगा, ये tan थीटा इंटू secant थीटा प्लस tan थीटा इंटू secant थीटा, तो it becomes what, 2 tan theta into secant theta divided by secant theta minus 1 into secant theta plus 1। I love this, इसको मिटा देंगे, हटा देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, सो व्हाट शैल वी डू आउट ऑफ दिस, सो वी हैव 2 tan थीटा इंटू secant थीटा minus 1 into secant theta plus 1। Don't you think this is a minus b into a plus b? Yes, it's true. So this becomes what, so this further becomes so this becomes 2 tan theta into secant theta, this is a minus b into a plus b, that is a square minus b square, so this becomes secant square theta minus 1 square, 1 square is nothing but 1, and of this but what is secant square theta minus 1?
we have what? 1 plus tan square theta equals to secant square theta. याद है आपको, मैंने डिराइव करवाया था, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम को थ्रू आउट AB स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तब आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा. सो अगर मैं इस 1 को राइट हैंड साइड भेज दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा. तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? tan square theta will be equals to tan square theta लेफ्ट हैंड साइड में रख लूंगा equals to राइट हैंड साइड के अंदर secant square theta. ये 1 will go to the towards RHS, it becomes 1. So what is this? Secant square theta minus 1 is nothing but tan square theta. तो क्या करेंगे इसकी जगह? कॉपी कर लो, इसको मिटा दूंगा. So what happens to this? This equals 2 tan theta into secant theta divided by tan square theta. Tan square theta. Now we have here tan theta and here tan square theta. So one tan theta gets cancelled. So here I'll teach you what is tan square theta. The thing would what? Tan theta into tan theta. Tan theta. So where we have here 2 tan theta into secant theta divided by, we have tan square theta. So for that I am going to write tan theta into tan theta. So one tan theta and one cancels. So I left with what? 2 secant theta by tan theta. So this becomes what? So it cancels. 2 secant theta by tan theta. Right? तो आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 2 कोसेकेंट थीटा. राइट? तो 2 कोसेकेंट थीटा कैसा आएगा यहाँ पे? व्हाट इज सेकेंट? सेकेंट इज 1 बाय कॉस. व्हाट इज टैन? साइन बाय कॉस आ जाएगा. देखो कितना आसान है. आंख मुझ के आंख खोल आ गया. सो दिस इज व्हाट? वेरी सिंपल. सेकेंट थीटा 1 बाय कॉस and this is sin by cos. So cos cancels. You get 1 by sin. 1 by sin is nothing but 2 by cosecant. So देखो this becomes 2 into secant theta divided by sin theta by cos theta. Right? So what I'll do? Secant. Now I'll rub this. Secant theta equals to 1 by cos theta. So instead of secant theta, I will substitute that by 1 by cos theta. इसको हटा दूंगा. Let's rub this. So ये क्या हो जाएगा? That is 2 secant theta. I'll write this 2 and I'll bring this 2 by, so this becomes cos theta into
sin by cos, sin theta by cos theta. So what I have done, I have pushed the secant theta to denominator, thereby it becomes 1 by cos. So it is 1 by, that is 1 by cos. Okay. So I rub this. So here what happens? Cos and cos cancels. You are left with what? You are left with 2 by sin theta. What is 1 by 2 by sin? That is 1 by sin. We know that. Sin theta equals to 1 by cosecant theta, or cosecant theta equals to 1 by sin theta. So what I do? This is nothing but 2 by 1 by cosecant theta. So sin becomes 1 by cosecant. So now this cosecant goes to the numerator. What happens then? That is 2 into cosecant will go to the numerator, cosecant theta. What he wants? He wants 2 into cosecant theta. So you got 2 into cosecant theta. Therefore, tan theta by secant theta minus 1 plus tan theta by secant theta plus 1, I put bracket, is equals to 2 cosecant theta. Hence proved. So इतना करने पर मिनिमम तो 4 रहेगा, और इंजीनियरिंग बी में ये आपको 4 मार्क्स के लिए रहेगा. अगर डिप्लोमा या पीयूसी में शायद 5 या 6 भी दे सकते हैं, मगर यहाँ मार्क्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको प्रॉब्लम करने का तरीका सिखा रहा हूँ. कोई प्रॉब्लम को सोल्यूशन है, फॉर एवरी प्रॉब्लम दिस इज अ सोल्यूशन, प्रोवाइडेड यू think positively, think in the direction of the problem, how to tackle this and how to solve this. So one hint I already given, whenever you have plus or minus, take LCM and start doing it. And it needs lot of practice, because trigonometry as it is, you cannot learn today and tomorrow you write the exam. You repeatedly have to do lot of problems, get ideas, generate ideas, and you have to, otherwise it will be difficult. So dear students, we will go for the next problem. Done. Dear students, अब एक प्रॉब्लम है, हम पे ऐसा दिया गया है, प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 4 सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा. इसको प्रूव करना है आपको. बहुत आसान सा प्रॉब्लम है. सिर्फ यहाँ पे क्या है, अगर एक आपको स्टेप मिल गया, एक क्या बोलते हैं, एक ट्रिक मिल गया सॉल्व करने का, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, तो प्रॉब्लम खुद ब खुद करोगे. मगर आपके लिए हिंट दूंगा, जब भी मैं बताया, जब भी आपको एक फंक्शन के बीच प्लस या माइनस आया है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. तो एलसीएम ले लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, खुद ब खुद आपको लीड करेगा. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो विल टेक एलसीएम, दैट इज व्हाट, 1 माइनस sin theta into 1 plus sin theta. So this is straight line. So 1 minus sin theta 1 minus theta डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या, 1 plus sin theta. So 1 plus sin theta 1 plus sin theta becomes 1 plus sin theta the whole square minus 1 plus sin theta 1 plus sin theta डिवाइड हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा. 1 माइनस sin theta इंटू 1 माइनस sin theta becomes 1 माइनस
sin theta the whole square. ठीक है, that is this and this cancels, you are left with 1 plus sin theta into 1 plus sin theta becomes 1 plus sin theta the whole square. That's what I have written. So ये क्या हो गया? So next step क्या करना है आपको? a plus b the whole square minus a minus b the whole square. इसको simplify कर लो, बन गया problem. That is 1 plus a plus b what? a plus b the whole square equals to a square plus 2ab plus b square. तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया. Okay, so a square is 1 square is nothing but 1. So 2 sin theta into 1, forget 1, I neglected, okay, I'll write once, plus b square, that is sin square theta. Done. I'll put this within brackets so that it will not go wrong. Minus sign है, minus sign डाल दो. So again this is a minus b. a minus b the whole square equals to a square minus 2ab plus b square. तो ये क्या बन गया? 1 square is 1 minus 2 sin theta Er.M.Ramdas plus b square, that is sin square theta, divided by what is this? 1 minus sin theta into 1 plus sin theta. So now we will try to remove the brackets, because अगर ब्रैकेट डालती, इफ यू डोंट पुट दिस ब्रैकेट यू मे गो रॉन्ग, आप गलत कर सकते हो, इसलिए मैंने ब्रैकेट डालती. मल्टीप्लिकेशन टाइम में हम गलती कर दोगे, ये बहुत बच्चों से होता है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट्स इस्तेमाल करने के लिए कहा, ताकि मल्टीप्लाई के समय आप इस ब्रैकेट को इस मैन को सही तरीके से यूज कर पाओ. सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज 1 plus 2 sin theta plus sin square theta minus into plus is minus 1 minus into minus 1 plus minus into minus plus, this will be 2 sin theta minus into plus minus sin square theta divided by what? 1 minus sin theta into 1 plus sin theta. इसको मिटा दूंगा. So what happens here? Plus 1 minus 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया. बचा क्या? 2 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा, that becomes 4 sin theta. That becomes 4. I'll write this 4 properly. That becomes 4 sin theta divided by 1 minus sin theta into 1 plus sin theta. So now अब क्या है? 1 minus, that is a minus b into a plus b, that is a square minus b square. Correct? Denominator क्या होगा? This is nothing but this is 4 sin theta divided by 1 square minus sin square theta.
करेक्ट, इसको मैं सो ये क्या, दैट इज 4 sin theta, 1 square is equal to 1 minus sin square theta. What is 1 minus sin square theta? 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta. So this becomes what? That is 4 sin theta by cos square theta. Since sin square theta plus cos square theta equals to 1, therefore cos square theta equals to 1 minus sin square theta. So I have substituted this value here. Okay, I love this. अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्या प्रूव करना है आपको, 4 इंटू सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा. 4 तो आ गया, सीकेंट चाहिए आपको एंड टैन चाहिए. सो इसमें मिल जाएगा ना, देखो. So that is equals to what? 4 into sin theta divided by cos square theta को मैं cos theta into cos theta लिखूंगा. So I write this as cos theta into cos theta. So what is this? This is nothing but 4 into sin theta by cos theta into 1 by cos theta. ठीक है. So sin by cos and I left with 1 by cos डिनोमिनेटर में आ गया. So sin by cos is tan आ गया, 4 की जगह 4 आ गया. What is 1 by cos? Reciprocal of secant आ गया. So therefore इसको मिटा दूंगा. But sin theta by cos theta equals to tan theta, and 1 by cos theta is nothing but secant theta. I call this as equation 1. मिटा दूं. Therefore equation 1 becomes what? 4 into sin by cos is tan, 1 by cos is secant, secant theta. What he wants? He wants 4 secant theta and tan theta. Rearrange it. This is nothing but 4 into secant theta into tan theta, isn't it? Whether A into B or B into A, both are same. So 4 secant theta and tan theta, we have proved it. Therefore, I love this. Therefore 1 plus sin theta by 1 minus sin theta minus 1 minus sin theta by 1 plus sin theta equals to 4 secant theta into tan theta. Hence proved. बच्चों समझ में आ गया? बहुत आसान सा प्रॉब्लम है. आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. एक बार इस प्रॉब्लम को पहचान लोगे
आसानी से खुद ब खुद करोगे, ये हमारा वादा है आपसे। सो प्रॉब्लम को पहचानो, शुरुआत करो खुद ब खुद, वो आपको रास्ता दिखाएगा, उस राह पर चलो, खुद ब खुद मंजिल पहुंच जाएंगे। ओके, डन। विल गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो बच्चों आपके लिए एक प्रॉब्लम दिया गया है। प्रूव दैट cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 minus tan थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 minus cot थीटा इक्वल्स टू sin थीटा प्लस cos थीटा। ये प्रॉब्लम सचमुच अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ट्रिकी है, मगर आपको ये करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री हर प्रॉब्लम जानना चाहिए, और जिस तरह प्रॉब्लम आपने कर चुके हो अगले प्रीवियसली, on the same basis you have to think। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री नथिंग बट शतरंज की जैसा है, शतरंज जैसा खेलते हो ना, आगे 10 स्टेप्स सोचते हो ना, इस तरह यहाँ पे सोचना पड़ेगा, तभी आप चतुर और चालाक बनोगे, बीरबल और तेनालीरामा की तरह, वरना सोते रहोगे। तो आपको जागना है तो कीजिए। तो मैं इधर क्या करूँगा, याद रखो इसको sin थीटा प्लस cos थीटा चाहिए, तो यहाँ पर न्यूमरेटर पे cos थीटा sin थीटा है, तो इधर tan है और cot है। अगर मुझे sin थीटा और cos थीटा चाहिए तो क्या हिंट, मैं यहाँ आपको हिंट देता हूँ, सो इसको भी कन्वर्ट कर लो ना sin एंड cos में, बन गया प्रॉब्लम। सब कुछ जब sin cos में आ जाएगा तो प्रॉब्लम खुद ब खुद आप करोगे। तो मैं सिखाऊंगा किस तरह करना है। दैट इज इक्वल्स टू cos theta divided by, I'll write 1 minus, what is tan? sin theta by cos theta, ऐसे लिख सकते हैं। देखो पूरा sin में cos में आ गया, प्लस sin theta divided by 1 minus, what is cot, क्या है cot, क्या है cos theta by sin theta, that is cos थीटा बाई sin थीटा। अब देखो सारा वैल्यूज sin और cos भी है, तो इधर क्या है, आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। इतना ट्रिक अब जान गए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बाकी का सभी छोटा सा बच्चा भी कर देगा। तो क्या है, आपको इधर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है, बाद में देखेंगे क्या करने का है। तो विल टेक एलसीएम, तो क्या करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू cos थीटा डिवाइडेड बाई, व्हाट आई डू, इसके नीचे एक डाल लो, इसके नीचे डाल लो, तो क्या हो गया, ये cos थीटा एलसीएम बन गया, 1 cos थीटा जाएगा, तो ये बन गया cos थीटा, माइनस साइन डालो, cos और cos डिवाइड हो जाएगा, तो बचा क्या, एक इंटू साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा प्लस, और दिस इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई, इसमें भी फॉर्म क्या है, एलसीएम इज साइन थीटा। सो ये एक बार जाएगा साइन थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा, माइनस साइन बचेगा क्या, cos थीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर गोस टू द न्यूमरेटर एंड गेट मल्टीप्लाइज, एंड हियर डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर गोस टू द न्यूमरेटर एंड गेट्स मल्टीप्लाइड। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को भेजो, सेंड इट टू द न्यूमरेटर, सो cos into cos becomes cos square, cos स्क्वायर थीटा पे ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा, डन, प्लस sin will go to the numerator, sin into sin becomes sin square, that is
sin square theta divided by sin theta minus cos theta. minus cos theta, ठीक है, इसको मिटा दूं, तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इधर cos थीटा माइनस sin थीटा है, इन बिटवीन प्लस, इधर sin थीटा माइनस cos थीटा, मुझे इसी तरीके से चाहिए। अगर मैं इसको मैं क्या cos थीटा माइनस sin थीटा कर सकता हूं, कर सकेंगे, कैसा, इस साइन को हटा दो, हटा के प्लस जाके माइनस बन गया, तो इसको इंटरचेंज करो, तो ये क्या बन गया, दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा, प्लस को मैं माइनस डाल दूंगा, डिवाइडेड बाय माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन माइनस कॉस हो, कॉस माइनस साइन, क्योंकि मैंने साइन बदला है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन गया, डन। ये स्टेप सीख लो, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, मुझे ये भी cos थीटा माइनस sin थीटा ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा है, इसको अगर मैं cos थीटा माइनस sin थीटा करना है तो इस साइन को चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो मैंने किया है, तो क्या बन गया, sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया और ये cos आके cos माइनस sin थीटा बन गया। सो इसको, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप को याद रखना, ओके, डन, आई ड्रॉप दिस। सो नो, अब हम एलसीएम लेंगे, ओके, एलसीएम क्या है, दिस, दैट इज नथिंग बट cos थीटा माइनस sin थीटा, so this becomes what, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है, एक बार जाएगा, एक इंटू cos स्क्वायर इज cos स्क्वायर माइनस है, माइनस डाला, cos थीटा माइनस sin थीटा एक बार जाएगा, 1 इंटू दिस बिकम्स दिस। इसके बाद क्या, इसके बाद बहुत आसान है, दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इजंट इट, ये क्या है, आई राइट हियर, दिस इज ऑफ द फॉर्म a square minus b square, which is equals to a plus b into a minus b, okay, so I'll write, तो ये क्या बन गया, that is nothing but this is your a and this, so this can be written as cos theta plus sin theta into cos theta minus sin theta divided by cos theta minus sin theta, so ये क्या हो गया, cos theta minus sin theta, cos theta minus sin theta उड़ गया, तो बचा क्या, cos theta plus sin theta, तो क्या चाहिए, sin theta plus cos theta, मगर यहाँ पर cos theta plus sin theta है, so रिवर्स करो ना, रीअरेंज करो, so this is equals to what, this is equals to cos theta plus sin theta, isn't it? By rearranging, I call this as equation 1, equation 2 डाल दूंगा, by rearranging equation 2, we get what, that is sin, that is sin theta plus cos theta
which is nothing but this. Hence, therefore, I'll write this. Therefore, cos theta by 1 minus tan theta plus sin theta by 1 minus cot theta equals to sin theta plus cos theta. Hence, proved. सो बच्चों, प्रॉब्लम्स बहुत आसान है यहाँ पर सोचने की कोई आवश्यकता है। प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, मगर प्रॉब्लम करने के लिए आपको दिमाग को लड़ाना है। मैंने बताया किस तरह लड़ना है, इस प्रॉब्लम को किस अंदाज से करोगे, ये इम्पोर्टेंट उस पर निर्भर होता है। सो आप आसानी से भूल नहीं पाओगे, इसको करना पड़ेगा आपको। सो इस प्रॉब्लम में बताया मैंने, tan एंड cot को sin और cos में लेके आ जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैंने बताया किस तरह करना है, तो करो, इसको प्रैक्टिस करो, दोबारा प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट ओनली प्रैक्टिस एंड थिंकिंग अबाउट फॉर्मूले, हाउ टू प्ले विद द फॉर्मूलेस, अदरवाइज यू कांट। सो विल गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब आपके पास एक प्रॉब्लम है, secant to the power of 4x minus secant square x equals to, you have to prove tan to the power of 4x प्लस tan स्क्वायर एक्स। बहुत आसान है, 2 स्टेप में आंसर मिल जाएगा, मगर टेक्निक आपको जाननी है। अगर जान गए तो आराम से कर सकोगे। तो एग्जाम में अगर आ गया तो सोचते रह जाओगे कैसा करना है, कैसा करना है। और एक बार जान गए तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम, विद इन 2 steps you can do this, and only way is you think in the examination what only problem you fail is how to solve this secant to the power of 4x. Once you know the technique, it's over. So वेरी सिंपल। और क्या करना है आपको, secant square x को कॉमन लेना है बस। सो विल डू दिस। दिस इज इक्वल्स टू, आई टेक secant square, I take secant common, so here we get secant square x minus 1, right? Now we know what is that, 1 plus tan square x equals to secant square x, and tan square x equals to what, secant square x minus 1. Done. So I'll make use of both the formulas here. So what is secant square x? So nothing but 1 plus tan square x, that is equals to what? For secant, all right, 1 plus tan square x into what is secant square x minus. So from this, if you take tan square, this one will go to the left hand side, right hand side, it becomes secant square x minus 1. So what happens is, this is nothing but tan square x, right, because of this. Okay, so now what you have to do, we want tan to the power of 4x plus tan to the power of tan square x, multiply it, you get it. So by multiplying, what happens, tan square into 1 is tan square x plus tan square into tan square x into tan square x is tan to the power of 4x. What do you want? Tan to the power of 4x plus tan. Just rearrange it. So by rearranging, what we get, that is tan to the power of 4x plus tan square x. So what you have to prove? Therefore, secant to the power of 4 minus secant square x equals to what?
tan to the power of 4x minus tan square x. So hence proved. Oh, this is the answer. ओके डियर स्टूडेंट्स, इतना ही है, बहुत आसान सा प्रॉब्लम है. अगर एग्जामिनेशन मिल गया तो आपके 2 मार्क के लिए मिलेगा, ये उतना ही, इससे ज़्यादा नहीं. अगर एग्जामिनर अच्छी मूड में हो, अगर उसके बेटे का बर्थडे हो, तो ये 4 मार्क्स भी दे सकता है. आपकी लक पे डिपेंड होता है. सो आई लव दिस. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ए प्रॉब्लम. प्रूव दैट cos to the power of 4x minus sin to the power of 4x equals to 1 minus 2 sin square x. That is also equals to 2 cos square x minus 1. In the examination, we will be asked prove that cos to the power of 4x minus sin to the power of 4x equals to 1 minus 2 sin square x, or cos to the power of 4x minus sin to the power of 4x equals to 2 cos square minus 1, or he might ask as it is to prove both the cases. So depends upon the examiner. तो आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं. आपको पता है क्या? So इसको हम क्या कर सकते हैं? So this can be written as what? This can be written as cos square x to the power of 2 minus sin square x to the power of 2. ऐसे लिख सकते हैं. So here I treat a equals to cos square x and b equals to sin square x, and this is the form what? A square minus b square. A square minus b square. So what is a square minus b square? A square minus b square is nothing but a plus b into a minus b. Okay, whatever formula I need, I'll write there and afterwards I'll make use of it. पहले इस फॉर्मूला को उधर लिखूंगा, उसके बाद उस फॉर्मूला का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. सो ये क्या हो गया? सो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे. दैट इज cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स इंटू cos square x minus sin square x. So we know that also what? Sin square theta plus cos square theta equals to 1 and sin square theta equals to 1 minus cos square theta. I want to prove both the case, I need it. So also cos square theta equals to 1 minus sin square theta. So whatever formula, जो भी formula चाहिए इससे लूंगा मैं. तो ये क्या हो गया? sin square theta plus cos square theta becomes 1. So ये बन गया 1 into I put cos square theta. I have to prove this. I put cos square theta equals to here. I call this as equation 1. So put. So I'll write one more step and then use it. So this is sin square theta plus cos square theta equals to 1. तो ये बन गया 1 इंटू cos square x minus sin square x. I call this as
equation 1. So 1 has no value, I'll rub it. So this becomes equation 1. So what I'll do, first case 1, put cos square x equals to cos square x is 1 minus sin square x, 1 minus sin square x in इक्वेशन 1. तो क्या होगा, इसको रख कर देंगे. सो इक्वेशन 1 becomes what? Becomes, so this becomes 1 minus sin square theta minus, this becomes 1 minus sin square theta, I have written 1 minus sin square theta minus sin square theta. Done. तो इसको मिटा देंगे. तो क्या हो गया, this becomes 1 minus 1 sin square theta minus sin square theta becomes 2 sin square x. Sorry, I have written theta only because of this. So this is sin square x and sin square x. So what do you want? First case is proved. Done. First case is proved. This is proved. Okay. If you want, straight away again write. Therefore, cos to the power of 4x minus sin to the power of 4x equals to 1 minus 2 sin square x. You can write, but we'll include both as whatever you want. We'll write in the similar way. वो जो चाहता है उसकी मर्जी हम वही करेंगे. So आप चाहे तो cos to the power of 4x minus sin to the power of 4x equals to ये बता सकते हो, मगर हम ये करेंगे, ये भी कर देंगे, उसके बाद दो भी एक साथ बता देंगे. So next, I wrote this. So ये तो सॉल्व कर दिया हमने. So इसको मिटा दूं. Done, sir, मिटा दो. So now equation 1 what? That is cos square x minus sin square x is equal. Now what I'll do, put sin square x equals to 1 minus cos square x in equation 1. So sin square जो आएगा तो क्या करूँगा मैं इसको, that is equals to what? That is cos square x minus bracket डालो, what is sin square? 1 minus cos square x. क्योंकि हमने sin स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर डालना चाहिए तो डाल दिया. इस साइन को इस्तेमाल करो, ब्रैकेट्स यूज करो जब भी, वरना क्या करोगे आप, फर्ज करो नहीं लिखा आप तो क्या कर दोगे, गलत कर दोगे. सो -1 आ जाएगा, तो ये कैंसिल उठ जाएगा. तो ये ब्रैकेट डालना बहुत ज़रूरी है, उसको डालो, देखो कितना फर्क आएगा. दिस इज अवर equation 1, isn't it? So this equation I rub it. I rub this also now. So this is what? This is cos square x minus into 1 is -1, minus into minus plus cos square x. So here cos square x plus cos square x is 2 cos square x minus 1. So ये क्या हो गया? This becomes 2 cos square x minus 1. क्या चाहिए उसको? 2 cos square x minus 1, वो भी आ गया. 2 पूछा था, हमने उसको सॉल्व कर दिया. Therefore, I write this, I rub all this.
therefore cos to the power of 4x minus sin to the power of 4x equals to 1 minus 2 sin square x, which is also equals to 2 cos square x minus 1. Hence proved. ओके, बहुत आसान सा प्रॉब्लम है. इतना है कि फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको cos स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर डाल दिया तो प्रॉब्लम हो गया. cos स्क्वायर एक्स टू पावर ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आ गए तो प्रॉब्लम सॉल्व. सो विल गो फॉर नेक्स्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ए प्रॉब्लम हियर. प्रूव दैट अंडर द रूट 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta is equals to secant theta minus tan theta. So this is a very simple problem, and I give a hint whenever there is a problem, important problem, I give a hint how to approach the problem. जब भी आपको एक नया टाइप का प्रॉब्लम आएगा, मैं आपके लिए एक टिप्स दूंगा कैसा प्रॉब्लम को टैकल करना है, किस तरह हल करना है. तो यहाँ पर जब भी आपको स्क्वायर रूट में मिलेगा तो अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा. ना रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर. फॉर एग्जांपल इस रूट को निकालना है, रैशनलाइज करो. कैसे? जो भी न्यूमरेटर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करो. सो अगर 1 plus sin थीटा है तो इससे 1 minus sin थीटा से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. सो विल शो यू हाउ टू गो अबाउट इट. लेट अस वर्क दिस प्रॉब्लम. दैट इज नथिंग बट अंडर द रूट व्हाट आई डू 1 minus sin theta divided by, I will put root, that is brackets 1 plus sin theta. सो इसको रैशनलाइज करो. किस तरह? जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो. फॉर एग्जांपल्स दिस विल बी अगेन ऑन द रूट. व्हाट यू डू 1 minus sin theta प्लस है सेम वैल्यू 1 minus sin थीटा. तो मतलब क्या हो गया? जो भी डिनोमिनेटर पे प्लस रहा तो इसको माइनस से करो, अगर माइनस हुआ तो प्लस से. मगर इक्वल रहना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. अगर इसको दो भी कैंसिल करो तो एक ही बचेगा. सो इट हैज नो वैल्यू. फॉर एग्जांपल यू हैव a by b, you are multiplying this by both the values by 3 into 3. if you multiply this 3/2 वैल्यू चेंजेस, इसका वैल्यू बदल जाएगा. जब भी इसको क्या करना है, आपको रैशनलाइज करना है, मतलब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूँ उसका वैल्यू विल रिमेन अनऑल्टर्ड. लाइकवाइज मैं मल्टीप्लाई रैशनलाइज करने के लिए मैं इसको प्लस की जगह माइनस से मल्टीप्लाई करूँ. अगर माइनस होता तो प्लस से करता दोनों को भी. सो ये क्या बन जाएगा? I'll rub this. This is equals to under the root 1 minus sin theta into 1 minus sin theta. इसको थोड़ा ज़्यादा बोल लूँगा. रूट को डिवाइडेड बाई 1 plus sin theta into 1 minus sin theta because of this. So ये क्या बन जाएगा? 1 minus sin theta into 1 minus sin theta is nothing but what? This is nothing but under the root 1 minus sin theta the whole square, that is a into a is nothing but a square. So 1 minus sin theta into 1 minus sin theta is 1 minus sin theta whole square. This is of the type a plus b into a minus b. A plus b into a minus b is nothing but a square minus b square. So a can be divided by 1 square is nothing but 1 minus sin square theta. Correct? So bracket डालो. Done. So this is again equals to what? Again equals to brackets 1 minus sin square theta
divided by, what is 1 minus sin square theta? 1 minus sin square theta is cos square theta. We have trigonometric identities. In that what? Sin square theta plus cos square theta equals to 1. So cos square theta equals to 1 minus sin square theta, correct? So 1 minus sin square theta को मैं I'll put cos square theta. So divided by cos square theta लिख सकता हूँ. I'll bring it in center. Divided by cos square theta. Now अगर मैं इन दोनों को बाहर लेके आऊँ रूट से, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सो ये क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए स्क्वायर है, अगर रूट से बाहर लाना है तो ये क्या बन जाएगा? नथिंग बट ए, है ना? उसी तो ये क्या हो जाएगा? उनमें साइन स्क्वायर थीटा अगर बाहर आ गया तो होल स्क्वायर. सो दिस इज द होल स्क्वायर, सॉरी. सो उनमें साइन थीटा द होल स्क्वायर. सो ये बाहर आना तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये बन जाएगा. सो जब ये बाहर ना आने वाला है तो दिस बिकम्स 1 माइनस साइन थीटा बाई cos theta, isn't it? So what he wants? Secant theta minus tan theta. आ गए ना? So I'll rub this. That is 1 minus sin theta, I'll put it in brackets, divided by cos theta. Can I write like this? This is 1 by cos theta minus sin theta by cos theta. लिख सकता हूँ? मैंने इसको तोड़ दिया है. सो 1 by cos theta minus sin by cos. ये क्या बन गया? So 1 by cos is what? Secant theta, reciprocal of secant is 1 by cos. तो ये बन गया क्या? Secant theta minus sin theta by cos theta is nothing but tan theta. Tan theta. Therefore, so एक स्टेप लिखना है आपको. Therefore, under the root 1 minus sin theta by 1 plus sin theta equals to secant theta minus tan theta. Hence, proved. तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम है. जब भी रूट आएगा ये प्रोसीजर, ये मेथड को अडॉप्ट करना है. रूट को ऐसा मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर दे के रहे डिनोमिनेटर उसका रैशनलाइज करो. इंस्टेड ऑफ प्लस माइनस लो, माइनस रहा तो प्लस लो, प्लस रहा तो माइनस लेके सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करो. आसान सा तरीका है. हर प्रॉब्लम को एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करो. मैं हर प्रॉब्लम को मैं बताया किस तरह टैकल करना है करके, उसी तरह करो, मिल जाएगा. और आपको ये फॉर्मूलाज बहुत अच्छी तरह याद रखना है. अगर फॉर्मूलाज याद नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे. सिर्फ बैठकर एग्जामिनेशन में हवा खाकर आना पड़ेगा आपको. ओके? क्योंकि आधा घंटे से पहले आपको बाहर नहीं भेजेंगे. आधा घंटे तक बैठकर करते बैठो. ओके? डन स्टूडेंट्स, let's go for the next problem.
Dear students, so we have done quite a number of problems and I hope you are very conversant with it, very comfortable with it. So what I need to advise you is, see that you work on these problems and try to be on the dot, because ये आपके लिए बहुत मदद करेगा. आपको जो भी मैंने पढ़ाया है उसको ये दोबारा पढ़ो. सो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको मत भूलो. सो मैं शुरुआत में आसान प्रॉब्लम किया था. आप इसको समाप्त करने के वक्त और 2 प्रॉब्लम आसान प्रॉब्लम करके आपका तबीयत हरी करना चाहता हूँ. तबीयत हरी होना इसका मतलब है आपको खुश करना चाहता हूँ. सो बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है. स्टार्टिंग में सिंपल प्रॉब्लम्स, बीच में कुछ कड़वाहट और आसान प्रॉब्लम्स. सो आपको खुश करने के लिए मैं 2 नया प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सो व्हाट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू इज, आफ्टर दिस पार्ट 3 आई एम जस्ट प्लानिंग टू start one latest. I have got something in my mind and got some idea creeped into my mind. That is, I would like to make some short videos, small videos, and name it as tips series. Tips series. So what does this mean? Trigonometry, important problems solved. So I'll write all these things in the YouTube. So I want to start tips series on trigonometry. Likewise for other chapters also. At the end of the some problems from that particular chapter, I'll select some few important problems which are most likely to come in the examination, and that will inspire you and that will definitely make you more sharper. So I have selected some few problems which I am going to load under this series. So tips series, problem 1, problem 2, problem 3, problem 4, etc. So whatever problems I name it, just you follow this. I will make a note on the right end of the thumbnail, that is tip series. Tips is there, number I will mention that, just follow that. So I am still not conversant with how to have playlist and all those things. I am trying to learn, because I am also a student like you when compared to certain tricks in YouTubes. So I am trying to improvise it. So I want to see that the ready reckoning should be made available to you. So you need to have to search for my particular YouTube. So what I am planning, I will make a playlist only for trigonometry series, for differentiation, for integration, and so on. So that at a fingertip, the moment you click it, you should be able to get all the problems worked on trigonometry. Like that I am planning. So I am also working on it. So dear students, until then please cooperate with me. So after doing this, I am going to start this tip series. I name this. Later it can be different names I will give you, and I advise you to strictly follow this tip series, because this will contain very important problems and examination points and how to solve steps. All those things will be taught to you. More or less how I have been guiding to you, the similar basis I have been teaching you. So just follow this, and most likely within a day or 2 I will post 1 or 2 problems on this. So big for 6 marks problems I post on this. So dear students, so without wasting much of time, we will end part 3 of trigonometry and start tip series. So let's solve this problem. Very simple problem. This is a minus b the whole square plus a plus b the whole square. If you apply this technique, problem is solved. It is for 2 marks. So how to start? That is, this is our type, a minus b the whole square plus a plus b the whole square. What is the solution? That is 1 square, I will write as it is, minus 2 tan theta plus tan square theta, that is a square minus 2ab into 1 is there, so I have ignored it, 2ab plus b square. So use a bracket plus, open the bracket, 1 square plus
2 tan theta plus tan square theta. There is no need for a bracket, but anyway. Okay, this is equals to what? This is 1 minus 2 tan theta plus tan square theta plus 1 plus 2 tan theta plus tan square theta. So what happens here? Minus 2 tan theta plus 2 tan theta gets cancelled. So I'll cancel this. I cancel this. So you have 1 plus 1 is 2. That is 2 plus tan square theta plus tan square theta. 2 tan square theta. This will be 2 tan square theta. Done. What is common in this? 2 is common. I'll take out that outside. So that is 2 common. This becomes 1 plus tan square theta, and we know 1 plus tan square theta equals to secant square theta. So this is equals to what? Nothing but secant square theta into 2. So we'll rearrange it. That is equals to 2 secant square theta. What we need, what we want, what he needs, 2 secant square theta. We have got 2 secant square theta. So therefore, I'll rub this step. Therefore, 1 minus tan square theta plus 1 plus sorry, make a change here. We are always used to this. 1 minus tan square the whole square plus 1 plus, that is 1 minus tan square, 1 minus tan theta the whole square plus 1 plus tan square tan theta plus So this, therefore 1 minus tan theta the whole square plus 1 plus tan theta the whole square is equals to 2 secant square theta, equals to 2 secant square theta. Hence proved. Hence proved. So very simple problem. So we'll do one more problem and wind up this part 3, and we'll start with tips series. So let's go for next problem. So dear students, let us take the last problem from part 3. That is, prove that cot theta plus 1 the whole square plus cot theta minus 1, I repeat, prove that cot theta plus 1 the whole square plus cot theta minus 1 the whole square equals to 2 cosecant square theta. This is also similar to the previous problem, but here instead of tan we have cot. So and this is what? A plus b the whole square plus a minus b the whole square. Just expand it, solve it, you got the answer. So let's do it. What happens to this? This becomes cot square theta plus 2 cot theta plus 1 plus 1 plus, I'll use this bracket, this is
cot square theta minus 2 cot theta plus 1. Done. So we have taken, let's just see, I have forgot to tell you in the beginning. See, whenever you are doing this problem, prove that something equals to something. So always try to start with left hand side, because this becomes difficult because we don't know how to start and how to end. But this is a lead. You should take a lead from here and start, and you can come, because 2 cosecant square, how to come to this? Very difficult. But you can solve this and you reach here. So always start from the left hand side. Done. So now what happens to, let's open the bracket here. So this is equals to cot square theta plus 2 cot theta plus 1 plus cot square theta minus 2 cot theta plus 1. So what happens here? Plus 2 cot theta minus 2 cot theta gets cancelled. So gets cancelled. So here cot square theta plus cot square theta equals 2 cot square theta. Here we have plus 1 plus 1. So what happens here? This becomes 2 cot square theta plus 2. So now what is common in this? Common is 2. So what I'll do? I'll remove that 2 as common. So what happens here? We get cot square theta plus 1. Right? We know that from trigonometric identities I have already proved, that is 1 plus cot square theta equals to cosecant square theta. So what is this? This is nothing but 2 cosecant square theta. What he wants? He wants 2 cosecant square theta. We have already reached 2 cosecant square theta. So therefore cot theta plus 1 the whole square, this is cot theta minus 1 the whole square equals to 2 cosecant square theta. Hence proved. Hence proved. So dear students, we have done quite a number of problems in trigonometry part 3. So if I want, I can do more problems, but time constraint, and I don't want to waste your time as well as mine. We can concentrate that portion of the time on some other chapters. So this can be used as a ready reckoner for you. Use it and try to improve your knowledge and try to do more problems from different textbooks. If you have any doubts, you can contact me. So dear students, so let's stop at this. Before I conclude, so after this part 3, I am going to start with, I am reminding you once again, I am going to start tips series. I had told you tip series, that is, I love this, okay, that is tip series. Tip series. So immediately after posting this, in a day or two, I'll start working problems for you, selecting problems, working for you, and I'll post it in individual videos, each problem in individual videos, so that you will be well conversant with such problems, because most of the problems will be
on examination based and examination point of view. So important for the examination point of view. So pay special attention for these problems and try to look for this. So as I said, I am still a beginner in YouTube. Teaching, okay fine, I have a lot of vast experience, but I don't know how. I am trying to learn how to post it in how to make playlists and post such a way that it should be easily available to you. It should be at your doors. So I am working on it, so don't worry, I will overcome those problems. So at this, I'll stop here. So with this note, I once again request you to like, share and subscribe to the channel. The only benefit you have in subscribing to the channel is that whatever videos I post, जो भी मैं वीडियोस यूट्यूब में डालूंगा, वो हर वीडियोस आप तक पहुंच जाएगा. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करो, उससे आपको नुकसान कोई नहीं होगा और मुझे लिए कोई लाभ नहीं होगा. मैं जो भी वीडियोस डालूंगा आपके लिए हाजिर हो जाएगा, वो आप कुछ भी मिस नहीं करोगे. यू नॉट मिस आउट इवन अ सिंगल वीडियो if you subscribe to my channel. That means to say we are trying to create a bond between my channel and you. So you will be my students forever. As long as my YouTube channel is there, you will be with me, and I'll see that a lot of students should be benefited of my video, and I request you to see that every child on this earth who's doing mathematics should be benefited. That's the reason I started from 7th standard onwards. I'm teaching 7th standard. Shortly I'll be starting for 8th, 9th, 10th, so on. I'm trying to work it out on my timings because I am also busy because I have to be taking classes. I have a lot of time for my students. I have to correct my question papers, classworks and all those things. So in my leisure time, I am doing all this to help you out. Well, examinations are fast approaching. So I want to finish trigonometry as early as possible, then go for next chapter. I'll see that the chapter should be common to diploma holders, PUC as well as engineering students. I'm working on such parameters. So students, I'll stop here. So let's meet again. Until then, goodbye, good night, take care, God bless you, good night.